Hello everyone, I am Dr. Apoorva and I have been working for Dr. Priyanka's lead physio for about 1.5 years now. So मैं जब यहाँ पे आई तो first I got introduced to the PPP protocol of Dr. Priyanka's and when I employed it on the patients मैंने ये देखा कि patients they are not just relieved symptomatically मतलब उनका सिर्फ पेन कम नहीं होता है बट हेल्थ वाइज भी उनको काफ़ी सुधार उनमें काफ़ी सुधार आता है. सो दैट इज़ वन ऑफ द वेरी बिग थिंग्स आई फील हमारे फिजियोथेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज हमको सिर्फ पेशेंट्स के पेन को ट्रीट नहीं करना है, हमको उसके रूट कॉज को ट्रीट करना है. सो दैट्स व्हाट दिस पीपीपी प्रोटोकॉल डज. Second thing that I love about this establishment is कि I have not only grown academically, I have also grown from other aspects. मेरा कॉन्फिडेंस बहुत इंक्रीज हुआ है. हाउ आई टॉक टू द पेशेंट्स, हाउ आई इंटरेक्ट विद द पेशेंट्स, दैट हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट. मेरा कंसल्टेशन जो पेशेंट्स के साथ मैं पेशेंट को कराती हूँ, दैट हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट. आई कैन एक्सप्लेन द पेशेंट्स वेरी प्रॉपरली इन अ वेरी प्रॉपर वेल मैनर्ड वे कि उनका कंडीशन बेसिकली क्या है एंड हाउ दे शुड प्रोसीड. मेरा असेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू सब कुछ काफ़ी इम्प्रूव हुआ है एंड कॉन्फिडेंस लेवल एज आई हैव टोल्ड काफ़ी इम्प्रूव हुआ है. एंड देन द थर्ड थिंग दैट आई एम थैंकफुल फॉर टू दिस एस्टैब्लिशमेंट इज़ कि even during this pandemic situation we could help the patient even by sitting at our homes. सेल्फ मैनेजमेंट एंड टेलीफिजियोथेरेपी ये काफ़ी टाइम से था हमारे इस्टेब्लिशमेंट में एंड वी थ्रू दीज टू what we can say platforms we have helped the patients a lot, I can say, even in this pandemic. And वो घर बैठे ट्रीटमेंट ले पाए and many of the patients got cured. And I'm very thankful to Dr. Priyanka's lead physio team, the whole team, for giving me this opportunity. And to the future physios who want to join, I would say कि this is a very good place to to grow, to do your job, because I would say कि आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, आपका असेसमेंट स्किल इम्प्रूव होगा एंड यू विल नॉट जस्ट ग्रो ओनली कि आपका थ्रू मतलब पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू या फिर आपका एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, बट सारे ही एस्पेक्ट से यू विल आपको समझ में आएगा कि यू आर ग्रोइंग. एंड आई थिंक दैट इज़ अ बिग थिंग फॉर ऑल ऑफ अस. सो थैंक यू.